Hi guys, good morning. Good morning, all of you. I think in the previous sessions, we discussed about the type of virtualizations and some concepts regarding the cloud, that is the elasticity, scalability, and so many others. And after that, we started to look into the multi-tier architecture. So just a quick round of a question, guys. So tell me, guys, if I have the host operating system, then that will be type 1 or type 2 hypervisor or virtualization. If I have the host operating system, is it type 1 or type 2? It will be type 1 or type 2. Yes, guys, everybody, please answer. Is it type 1 or type 2? So in which case we can get efficient use of the virtualization technique, type 1 or type 2? Efficient use, so that all the resources can be used, utilized very effectively. It is type 1. Which is the bare metal hypervisor? Is it type 1 or type 2? Which is bare metal hypervisor? Type 1 or type 2? Type 1 is the bare metal hypervisor. Which is the host based virtualization? Which is the host based virtualization? It is the type 2. It is the type 2. If I am increasing and decreasing the capacity, and which is the short term, then is it what that terminology is called as? Elasticity. It is called as elasticity. Which AWS service provides the elasticity, guys? Which AWS service provides the elasticity? Yes, guys, everyone. We didn't cover this particular thing, but still you must be answering because we covered that in our session. Just the name of the service, guys, not more than that. It is the elasticity that provided by the AWS services, AWS auto scaling. AWS auto scaling. So tell me, guys, elasticity is a temporary or long term? It is the temporary concept. Scalability, guys. If I increase the size of the server, it is the scalability. Scalability is permanent or short term? Scalability is permanent and long term, right? It is a long term concept. So if I am having zero downtime, that means what? If I'm having the zero downtime, that means what? I have the highly available application or the architecture. Highly available application or the architecture. So if my application is not accessible for the end users uh, in the observation period, then can I call it as highly available? Can I call it as highly available? No. So application should be available there. Then only it is called as the highly available, and there should be near to zero downtime. Near to zero downtime. So can I recover application in if the application is down? So can I recover the application? Yes. Yes. So if my durability is less, that means what? Chances that my data or the application will be lost will be higher. Will be higher. And here we can, how we can measure the durability by using the concept of data loss or the application loss. So this will not be preferred in the organization. Durability should be there, so that high durability will be preferred. So near to 100% durability should be there, and high availability should be there. So how many tenancies are there? How many tenancies are there? Two. What are those? What are those? Shared and dedicated. Nice. Those are shared and dedicated. So in shared tenancy, so can I have a private virtual machine in shared tenancy? Can I have a private virtual machine? No, guys, it is shared among different users. Can I decide which users will be there in another virtual machines?
No, you don't have any control. Do you have any control on the underlying host in the shared tenancy? जिस होस्ट पे भी वो VM डिप्लॉय होगा तो उस पे हमारा कंट्रोल होगा? No, we don't have any control on the shared tenancy underlying host. So in the dedicated tenancy, that means underlying host or whole hardware is provided to you and it is allotted to you, so that is dedicated to you. So among shared and dedicated, which one is the costlier? Which one is the costly? Definitely guys, dedicated is the costliest and the shared is cheaper than the dedicated. So so if you have the uh, on-premise infrastructure, so do you need a capex in order to deploy application? Do you need a capex? Yes. Okay. Do you need a opex for the on-premise? Do you need the opex? Yes. Both yes, right? So you need the capital expenditure and operational expenditure. So both you will be needed. So in the cloud, so do you need a capex? No, definitely. You don't need any capital expenditure. You don't need any capital expenditure. But operational expenditure, yes, we need the operational expenditure, guys. So operational expenditure will be like a monthly bill that you are getting for the AWS account. AWS account. So if I have the server, client, application, database all on the same server, which tier application it is? It is the tier 1 application. It is the tier 1 application. If I have the client in one and another machine has the server, and on the server I have application, database, everything, that is a tier 2 application, guys. It is the client server architecture. If I have client, application and the database separately, then that will be tier, very simple guys, it is tier 3 application, tier 3 application. So in industry, which tier application is preferred? Which tier application is preferred? N tier application is preferred in the industry, guys. N tier. So N tier will be preferred. So N should be higher in order to make the compliance and the security features. So the N tier will be used. So how many models of cloud computing we just in the previous session we saw? How many models? Two. What are those? What are those? Just short form. What are those? One is the deployment model. One is the deployment model of cloud computing. Another one is the service model. Very nice. Another one is the service models. So in the deployment models, we saw different types of deployment models. So if the cloud is open for everyone, if cloud is open for everyone, so which type of cloud it is? Which type of deployment cloud it is? It is the public cloud. It is the public cloud. In public cloud, who will be maintaining? Who will be doing the maintenance? Who will be doing the maintenance in the public cloud? Very nice. It is the cloud provider which will be doing the maintenance, guys. So what are the examples, guys? Public cloud example. Very nice. It is the AWS which we are studying. Next, which is the another type? One is the public cloud. Next is private cloud, guys. Private cloud. So in the private cloud, will it be open for everyone? Will it be open for everyone? No, it is limited to single organization. It is limited to single organization. Who will be maintaining? Who will be maintaining? Organization itself is maintaining the infrastructure. So hybrid cloud is a combination of public, private, public. Okay. So it is something like combination of the clouds. That is the hybrid cloud. So in industries right now, many people are using which type of cloud? Hybrid cloud. People are using mostly hybrid cloud to take the advantage of multiple vendors, multiple service providers, and also the on-premise system. So if I have on-premise infrastructure in my company and also the AWS cloud I am using, so which type of cloud that we are using? Combination of private and public. That will be the hybrid cloud. So that example will be hybrid cloud.
So in community cloud, we are not using the community cloud right now because it is like a very old concept of public community cloud, that two some companies to come together and they will create an infrastructure and they will maintain that for their community. So 2 3 companies will be there, or there are number of multiple companies, they will come together and they will build the infrastructure. ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? Any difficulties guys till now? Whatever things we discussed? Yes, each concept is clear. So just let me share my screen. Yes, the screen is visible to all. Yes, thank you. So the next type of model, cloud computing model, is the service models of cloud computing. When this cloud computing was arrived in the market, so these are some basic service models that we will be discussing. So this is the service models of the cloud computing. Let's see what are those models. So in that service models, we have first, that is, so what is the difference between them first, the deployment model and the service model? So if you are providing service to some other companies, so how much like how much access you are giving to the vendors, yeah, your end users, so that will be decided by the service models. So how much service you are giving to the end user or your client, so that defines the service model that you are using. So डिप्लॉयमेंट मतलब क्या, कि आप डिप्लॉय कैसे कर रहे हो, आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आप डिप्लॉय किस तरीके से कर रहे हो. So either you are deploying for the public, for the private, for the hybrid, or for the community. So that depends upon the how you are deploying the things there. Okay, infrastructure किस तरीके से deploy कर रहे हो या फिर बना रहे हो. But in the service models, how you are giving services to the client or the end users. So आप क्या कर रहे हो सर्विस मॉडल से, ये डिफाइन कर रहे हो कि आपको कितना सर्विस देनी है. यस, कितना सर्विस देनी है. जैसे कि अभी हम लोग सपोज जस्ट आई एम डिलीवरिंग द सेशंस, आई एम नॉट शेयरिंग द रिकॉर्डिंग विथ यू. So that is one type of service that I am providing. If I am providing the recordings also, so that is another type of service. That is more service I am providing. Even I am sharing some notes, that is another advantage that I am giving to the end user. So these service models differ how much service I am giving to the end users. So अभी इसके कुछ models हैं, not limited to the only those that we are discussing. So one is the infrastructure as a service. Infrastructure as a service. This is one type of model which is very important. Infrastructure as a service, because AWS is giving this for many services. अब ये एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि AWS is not the single service. Correct guys? AWS एक single service नहीं होता है. There are multiple services in the AWS. So there are more than 250 plus or near about 300 services are there till date. So these all services have different type of services, service models. Okay, so some services have the infrastructure as a service. So what does it mean? First we will understand that कि infrastructure as a service का meaning क्या होता है वो पहले हम लोग देखते हैं. So here what service that is provided by this model is the infrastructure. Yes, name itself is saying क्या दे रहा है वो, it is only giving you the infrastructure or the hardware. It is giving you the hardware. So this is the service that only gives you the infra, that gives you only the
infra. What does it mean? Infra मतलब क्या होता है? Infrastructure मतलब क्या होता है? Infrastructure comes with the examples, like what are the examples of infrastructure? It could be the servers, it could be the um, databases or data stores, and it could be the volumes, it could be something like सर्वर हो गया, रैम, मतलब ये सब आ गया अंदर, मेमोरी वगैरह सारी चीजें आ गई. So overall infrastructure will be given to you, and it's up to you how you can utilize it, how you can use it. तो आपको यूज करने के लिए इंफ्रा मिल जाता है, right? In those services you will find the infrastructure, and it is up to you how you can use it. अभी एक सर्वर आपको मिलता है, right? Right, guys? If one service is there, that is one example of this infrastructure as a service is what? EC2. So EC2 is one service in AWS. जिसको अभी पता नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ. So EC2 is a service in AWS which gives you the servers, which gives you the servers or the instances. In AWS we call server as a instances. So EC2 is a service where we can get a servers. तो अभी सर्वर देता है आपको, right? AWS. So what are you going to do with the EC2 is up to you. That is not the AWS lookout. तो EC2 में आप जो रखना है रख सकते हो, अगर कुछ नहीं रखना है तो ऐसे ही चला भी सकते हो, राइट? दैट सर्वर इज गिवन टू यू, इट इज अप टू यू दैट हाउ यू कैन यूटिलाइज इट. तो ये किस टाइप का हो गया फिर? विच टाइप ऑफ सर्विस दिस इज? दिस विल बी दी infrastructure as a service. You will be given an infra, you will be given an infra here. So directly आपको infrastructure मिल जाता है, so you can make use of it. So next is another type, that is the second one, that is the platform as a service. Platform as a service. So this is the platform as a service. So in AWS we have a platform as a service example of elastic beanstalk. Elastic beanstalk is the example for the platform as a service model. So इसमें क्या होता है आपको? Not only the server is or infrastructure is provided to you, but also the platform, also you will get a platform. Here you will get all the infra. ठीक है, मैं डायरेक्टली इंफ्रा लिखता हूँ. इंफ्रा तो मिलता ही है. On top of infrastructure, on top of infrastructure you will be getting the platform, then you will be getting the pre-installed applications, है ना? आपको applications भी मिल जाते हैं. It is not good to say the application, because application is something that we are developing, right? So infrastructure और एक platform मिल जाता है आपको, right? You will get one type of platform. अभी इसका एक meaning समझ लो, platform क्या होता है. So whenever you want to deploy an application of वेब सर्वर, ठीक है, आपको एक वेब सर्वर डिप्लॉय करना है, सिंपल एग्जांपल है. तो उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? टेल मी गाइस. इन ऑर्डर टू deploy a web server, first you need a server first, right? You will need a server first. On in server you need to install the OS. Then you will need what? On top of that you will need a web server, either it is Apache or Nginx. That is the web servers that you will be needed. So all those things will be pre-installed in the package here in the platform as a service. In the platform as a service you will get that as a package in the platform as a service. So here we will be getting the OS. We don't have any option to select the OS here, but in the infrastructure, whenever you are launching the EC2 instance, you have that option. आप ये select कर सकते हो कि मुझे किस type का operating system चाहिए in the infrastructure as a service. But here you don't have any option to select this. So here what happens? The OS, then the runtime, you can call it as a runtime. ये सब आप इधर से select कर सकते हो. Yes. So this is something that you need to see in the platform as a service. So platform में customization कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है अभी? Can I do more customization in the platform as a service or not? No. Yes or no?
Can I get more customization in the Elastic Beanstalk? So the answer is no, guys. Why? Because you are already getting all those things. अभी suppose मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चीज चाहिए. So can I get from here? No. If I have the EC2, I can get a more customization. मैं उसमें बहुत सारा customization कर सकता हूँ because that are not limited to the infrastructure itself. Infrastructure itself. So आपको infrastructure है, उसके ऊपर और बहुत बहुत सारी चीजें आपको already pre-configured मिल जाती है जो कि आप customize नहीं कर सकते. आप कस्टमाइज नहीं कर सकते. So why we are using that platform then? Why we are using this type of services? So we have many people who don't have that much of knowledge. So that, yes, Ankit, you can go ahead. You can put in the chat if you have any issue. Yes, please let me complete. Yes, so let me complete all the models, and after that, if you have any doubts, then we can discuss that later. So here in this particular platform as a service, so Elastic Beanstalk, we get less customization here. We get less customization, and you have more customization in the infrastructure as a service. We will discuss that later. ठीक है कि क्या कैसे customization होता है वो देखेंगे आप. Next is a software as a service. Software as a service. This is the, we can call it a SaaS model. So some of you might be working with the Salesforce or uh, yeah, that is some type of that. So these are like there are so many examples. There are so many examples. You don't have to do anything. Even the application is provided by the service provider itself. So everything will be given by the service provider. Everything given by service provider. You just need to put it in your as per your use case. तो आपको सिर्फ इसको use करना है, right? So even you are using the Google Drive, that is also one type of this. So there are so many examples. वहाँ पे आप directly आपका मतलब directly you can use that as a software as a service. Directly आपको software ही मिल जाता है. So you just need to install or you can use that software directly. You don't have to do any customization. यहाँ पे आपको कुछ customization मिलता है करने के लिए. Is there any customization that you can do here? Very less as compared to these two. Very less as compared to these two. So here, very less customization. Okay, ठीक है, ये नहीं लिखता हूँ अभी मैं. I don't want to confuse more with this. So these are some service models that you can observe here. So how many types we just saw? That are infrastructure as a service, platform as a service and software as a service. These are the well known models जो कि बहुत यूज होते हैं मतलब wordings में. But in practical right now there are so many models that are available. We call it as anything as a service. So like that model is there. So anything as a service. So you are giving the database. So this is database as a service model. Database as a service model. So like that people are calling right now. But earlier days people will be calling like infrastructure as a service, platform as a service, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. और ये एक शार्प बाउंड्रीज है इसमें, मतलब शार्प बाउंड्रीज नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. इसमें एक शार्प बाउंड्रीज नहीं बोल सकते हो आप. these are limited, these lines are limited. So let's see, I have one, like I can show you one image of that. Just let me service models of cloud compute computing images. Yes, it's a nice diagram. Okay, छोटा है. Let me take a nice overview, and there is possibilities. Very delicate.
ओके, यस एवरीवन इज विजिबल है। ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम में ये है, यहाँ पे ऑन प्रीमाइस है। I think you might be looking here, right? So is it visible on premise as a service? Because black में dark black है ये, right? So just मैनेज दैट, राइट। सो अभी ये चीज देखना है आपको कि दीज आर सम लेयर्स। देखो, पहले तो नेटवर्किंग लगता है आपको जब भी आप ऑन प्रेमाइस या फिर एडब्ल्यूएस में जब भी आप कुछ या आपका एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू विल बी नीडेड। तब जाके आपका एप्लीकेशन क्या होता है, लाइव हो सकता है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी नीडेड? वन इज द नेटवर्किंग, देन देर इज अ स्टोरेज। स्टोरेज किस लिए? आपको स्टोर करना है ना, जो भी डेटा है आपको स्टोर करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्टोरेज चाहिए। देन स्टोरेज विल बी नीडेड टू रन सम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे आपको स्टोरेज चाहिए, हर सर्वर पे आपको स्टोरेज चाहिए। सो दिस विल बी नीडेड। सो नेटवर्किंग इज द फर्स्ट, देन स्टोरेज रिक्वायर्ड, देन आपको सर्वर चाहिए कंप्यूट कैपेसिटी के लिए। जो भी आपका एप्लीकेशन होगा वो उसमें कोड होगा तो वो रन होगा, राइट। सो टू रन द कोड यू विल नीड ए सर्वर। तो सर्वर पे क्या होता है आपको, what will you get from the server? From the server you will be getting the memory, CPU and all the compute। आपको यहाँ पे सारा कंप्यूट मिल जाता है। तो स्टोरेज भी चाहिए और आपको कंप्यूट भी चाहिए ताकि ये प्रोसेस कर पाए, राइट। देन विदाउट वर्चुअलाइजेशन, इज इट efficient use of resources guys? वर्चुअलाइजेशन कंपलसरी है, yes or no? Yes, virtualization is must so that you can utilize all the servers very effectively। तो वर्चुअलाइजेशन के सिवा AWS आपको सर्वर्स नहीं प्रोवाइड करता है। सो दिस वर्चुअलाइजेशन एंड ऑन टॉप ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये ओएस है। विच टाइप ऑफ ओएस दिस इज? गेस्ट ओएस और द होस्ट ओएस गाइस? टेल मी, विच टाइप ऑफ ओएस, गेस्ट और द होस्ट? यस गाइस, confused? Yes, others please. Which type of operating system it is? Guest OS or the host OS? So remember guys, which type of OS this is? देखो, yeah, let me, on top of virtualization, if I am deploying any virtual machine, so that virtual machine will have which type of OS? It will be the guest operating system. If on the underlying hardware if I am deploying some operating system, that is the host OS। वर्चुअलाइजेशन के ऊपर अगर जो मैं ओएस देखो, आपके आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया वर्चुअलाइजेशन का, VMware या फिर ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, तो कुछ भी आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया आपके मशीन में या लैपटॉप में। सो दैट वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर विल देन क्रिएट वर्चुअल मशीन्स। यस गाइस, आप उसके थ्रू मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हो। ये जिसको पता नहीं है, तो आप एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आपके इसमें इंस्टॉल कर सकते हो और उसके ऊपर आप मल्टीपल VMs बना सकते हो, मल्टीपल VMs बना सकते हो। सो टेल मी गाइस, इफ यू आर यूजिंग द विंडोज 11 OS, if you are using the Windows 11, so tell me guys that Windows 11 is host OS or the guest OS? Yes, it will be the host OS. In your personal computer, if you are installing the virtualization software and you are creating the VMs, then that will be the host OS. Whatever OS you are using, that will become the host OS. If I done the virtualization by installing a software in my operating system and then I created the VMs, मैंने उसके बाद क्या किया, VMs क्रिएट किया। एक VM मैंने क्या किया, रेड रेड हैट का एक फ्लेवर ले लिया, यूबंटू, ओके, सॉरी रेड हैट का एक फ्लेवर लिया लिनक्स का, राइट। सो लिनक्स का एक फ्लेवर रेड हैट में ले लिया। तो टेल मी गाइस, दैट VM ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी गेस्ट OS और होस्ट OS? It will be the guest। on top of that virtualization, if I deployed one more virtual machine which has the ubuntu, then that VM will be, that OS will be guest or host? That will be guest OS or host OS? Nice. So all those are the guest OS on top of the virtualization. Did you got this concept? Guest and host? Very important one. Yes. Nice. So here we can see.
Here if you see that on top of virtualization I am getting this OS, right? So this will be the guest OS, not the host OS. Then there are the middleware and runtime. You don't have to go in depth of this because this is mostly related to the um, सॉफ्टवेयर और द एप्लीकेशन दैट यू आर रनिंग. आपका कोड जो भी है तो उसके लिए आपको रन टाइम लगता है. जावा में कोड लिख रहे हो तो जावा का रन टाइम, फिर मिडलवेयर एक लगता है इसको सपोर्ट करने के लिए. सो दिस टू आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन. दिस टू आर रिलेटेड टू द एप्लीकेशन. सो डेटा इज व्हाट? डेटा इज समथिंग विच इज नीडेड फॉर योर एप्लीकेशन. तो कुछ डेटा आपको लगता है एप्लीकेशन के लिए. जैसे कि सिंपल एप्लीकेशन है आपका, चैट एप्लीकेशन है तो यूजर का डेटाबेस, यूजर्स का इंफॉर्मेशन, और यू कैन ऑल्सो से दैट code is also there, right? Code is also there. So this is all about the data, and here on top of that your application is running. So all those are that you need to manage in the on premise, yes or no? For the on premise, all everything you need to manage for this. Yes. So in the infrastructure as a service, what you are taking the advantage of AWS. AWS ने क्या बोला कि इतना सारा करने की जरूरत नहीं है. I am there for you. Don't worry. So I will be managing till this OS layer. I will be giving you all those things till the OS level, and you focus more on the application. तो आपको ज्यादा इधर फोकस करने के लिए बोलता है AWS, and AWS has that expertise to manage all those things. तो आपसे अच्छा AWS मैनेज कर सकता है ये सारी चीजें, तो आप इसमें मत पड़ना, आप एप्लीकेशन डिप्लॉय करो, एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करो. सो लेट एवरीथिंग टू बी मैनेज्ड बाय द AWS. So what AWS is giving you? AWS is giving you the networking, it is giving you the storage, it is giving you the servers, virtualization, or OS. So tell me guys, virtualization concept अगर से आपको पता नहीं है, if you don't know the virtualization, can you deploy EC2 instance? Yes guys, can you deploy EC2 instance? Of course yes, of course yes. Why? Because everything is managed by the AWS, so you don't have to worry about it. मालूम होना is a positive or good thing, but if you don't know, you can directly deploy the server na. You don't have to look into virtualization, how it is done, and you need to create a VMs out of it. ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है आपको. Even though you don't know the virtualization, still you can have your application running on the EC2 instances. So आपको कहाँ से देखना है? Even you don't have to worry about how to install the OS. Yes or no guys? Those who are working with the EC2, आपको EC2 इंस्टेंस में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं होती है. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय द AWS. ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके AWS प्रोवाइड करता है आपको. सो टेल मी गाइस, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी मैनेज्ड बाय whom? It is managed by, in our case, it is managed by AWS guys. It is managed by AWS or the service provider, whatever service provider you are using. So this is the infrastructure as a service. Till the OS layer, you are getting the help from the service provider. And this middleware, runtime, data and application, this all you need to take care. This all you need to take care. तो आपको कुछ जावा एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो वो आपको इंस्टॉल करना है, उसका रन टाइम, और फिर उसके बाद आपको कोड वगैरह चढ़ाना है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है फिर. सो AWS विल नॉट लुक इनटू इट. तो आपको OS तक आपको रेडी करके देगा सर्वर. सो आफ्टर दैट व्हाट थिंग्स यू नीड टू इंस्टॉल, हाउ यू नीड टू कॉन्फ़िगर, एवरीथिंग विल बी अप टू यू. यस गाइस, डिड यू गॉट दिस कंसेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है आपको. यस, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे रहा है. या सो टेल मी व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस? No, no, just I am asking the infrastructure as a service. Very good. So the best example for the infrastructure as a service in AWS is the EC2. Is the EC2. EC2 सर्विस है जिसमें कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ले सकते हो. That will be giving you the networking, storage, servers, virtualization, OS. Okay. Is there any confusion with the infrastructure as a service now? Yes. Okay. So I will go with the platform as a service now, right? So in the platform as a service, this middleware and runtime that you need to install, right? आपको जावा के लिए कुछ रन टाइम चाहिए था, फिर पाइथन ले रहे हो तो उसके लिए कुछ अलग रन टाइम चाहिए था, फिर कुछ और एप्लीकेशन डिप्लॉय करे तो उसके डिपेंडेंसी चाहिए थे. सो दीज यू नीड टू लुक, राइट? आपको इसके अपडेट, पैचेस, एवरीथिंग यू नीड टू लुक. तो आपको पाइथन का नया वर्जन आता है तो आपको उसको इंस्टॉल करना है, उसको अपडेट करना है, कंटिन्यूसली यू नीड टू लुक फॉर दिस. यस और नो गाइस? हियर
But in the platform as a service, middleware and runtime also taken care by the service provider. Middleware and runtime also taken care by the service provider. What you need to do here? Only you need to upload the code. Only you need to upload the code. यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है? कोड अपलोड करना है. क्या करना है अभी? सिर्फ आपको कोड अपलोड करना है. तो जिनको अभी इसका भी नॉलेज नहीं है, रन टाइम और मिडलवेयर का भी नॉलेज नहीं है, या फिर उनको नहीं पता है कि किस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, EC2 सर्वर्स को कैसे मैनेज करना होता है, दे कैन गो फॉर दिस. दे कैन गो फॉर दिस. सो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इन AWS? Elastic Beanstalk. You can shortcutly tell it as a EB, like Elastic Beanstalk. So this is the platform as a service example. So here tell me guys, operating system तक तो ये दे ही रहा था, plus middleware और रन टाइम भी AWS दे रहा है. That is simpler for the developer. Yes guys, this is more simpler for the developer, more handy for the developer. What developer will do? They will just push the code. They will just put the code. यहाँ पे एक environments होते हैं, तो environment आपको सिर्फ update करना होता है. That's it. Server manage करता है AWS, सारी चीजें AWS manage करता है background में. So if there are some patches, automatically update भी होता है हर एक चीज. So each and everything will be taken care by the AWS. So only you need to upload the data here. Data means what? Your application data. तो आपका जो कोड है ये है वो सब आपको इसमें अपलोड करना होता है. So everything will be taken care by the AWS. यस गाइस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस समझ गया? सिंपल है, कंसेप्ट सिंपल है. यस. सो इन द सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस अभी क्या हो गया कि बोलते हैं ना कि हमको ये भी नहीं करना है, कोड भी नहीं चढ़ाना है, बिकॉज आई एम नॉट अ डेवलपर. सो आई इवन डोंट हैव द कोड आल्सो. सो आई डोंट हैव इवन कोड. मुझे रेडीमेड एप्लीकेशन चाहिए. एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड बाय द वेंडर इटसेल्फ. तो कुछ ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो दैट एंड यूजर्स, कुछ ऐसे कंपनीज है जिनको कि डायरेक्टली सॉफ्टवेयर चाहिए एज अ सर्विस, कि सॉफ्टवेयर उनको एज अ सर्विस. वॉट एवर थिंग्स वी आर यूजिंग हियर, वेबएक्स एप्लीकेशन, you can call it as a software as a service directly, because I am using the software. Yes, I am using it as a software. So directly I am getting this. So do I need to write a code? Do I need to write a code? Do I need to do anything here? No guys, just I need to purchase the software and enjoy. So this is the software as a service. So this is the software as a service. So you can give this type of service to the end users, because you are not something like you are just using the software. So you are developing the software. So which two things that we are more looking into? One is the infrastructure and another one is the platform as a service. So mostly we will go with the infrastructure as a service, because we are the administrator. So we mostly look into the infrastructure as a service. So here now, if you go from on-premise to the infrastructure as a service, to the platform as a service, to the software as a service, as you are going, so tell me guys, the um, skill set that you require to manage the things are decreasing or increasing? क्वेश्चन समझ में आ गया? When I am moving from the on-premise to infrastructure to platform to the software, जो स्किल सेट मुझे चाहिए वो, मतलब रिक्वायर्ड स्किल सेट, ये कम हो रहा है कि ज्यादा चाहिए मुझे? इट इज डिक्रीजिंग. हियर यू विल नेट so much like skill sets. Here somewhat lesser, here somewhat lesser. Here you don't need any skill set, just use the application. Application use करने का skill set चाहिए बस. So this is the power of these type of things. But tell me guys, when I am moving from on-premise to the infrastructure to the platform to the software, will my customization is decreasing or increasing? Means that facilities that I can have in the customization बढ़ रहा है कि decrease हो रहा है? Yes guys, customization is also decreasing. देखो, जितना आपको customization यहाँ पे मिलता था, type of servers you can choose in here also infrastructure, but the cores and all that you can choose here. सर्वर आपको सपोज इंटेल का नहीं चाहिए, मुझे AMD का पर्टिकुलर टाइप का ही सर्वर चाहिए. कैन आई गेट फ्रॉम AWS EC2? एक पर्टिकुलर टाइप का ही सर्वर चाहिए, ये AWS देता है, बट देर आर नो सो मच कस्टमाइजेशन. बट यहाँ पे आप खुद जाके परचेस करके ले सकते हो सर्वर. स्टोरेज, अभी सपोज EBS में स्टोरेज आता है, मुझे अलग टाइप का ही स्टोरेज चाहिए, राइट? सो I can choose from here. You have the option to choose, but that options are limited. Yes. So उतने limited options में से ही आप choose कर सकते हो. You don't have many more options like the on premise. On premise में आप जितने
वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, उसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो. सो हियर यू हैव highest customization. In infrastructure you have some less customization. In platform you get again less customization. In software no customization at all. तो आपको कस्टमाइजेशन किधर अच्छा मिलता है? ऑन प्रीमाइस में. बट टेल मी गाइज, टू मेंटेन ऑल दोस थिंग्स दैट आर हार्डवेयर लेवल थिंग्स इज नॉट रिकमेंडेड. दैट्स व्हाई द बेस्ट चॉइस विल बी व्हाट? आउट ऑफ ऑल दोस टाइप ऑफ सर्विस models we saw, the infrastructure as a service is the best choice that we can have in our infrastructure. Yes, guys. Is anything that you want to ask? And one more thing, just one thing, Liman. So tell me, guys, if something happened to the virtualization thing here in the infrastructure as a service, if something happened to the virtualization layer, so who will look into it? You or the service provider? Yes, it is the service provider or the AWS that is looking into it, right? So in the platform as a service, if something happened to the operating system, who will look into it? Very nice. Service provider. In the software as a service, if something happened to the virtualization, who will look into it? Again, service provider. Nice. So if something happens to the data or the application in the platform as a service, so कौन देखेगा फिर? Who? You or the service provider? डेटा या फिर आपका कोड को कुछ हो जाता है, so you will be looking. So in the infrastructure as a service, if something happens to the runtime or the Java application, then you need to look, right? So then you need to look here. So if something happened to the networking in the infrastructure as a service, मतलब ये मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ. इफ समथिंग हैपेंस टू द नेटवर्किंग मींस व्हाट? नेटवर्क फेल हो गया है पूरा, है ना? कहाँ पे कनेक्शन हार्डवेयर लेवल फेलियर हो गया. सो हु विल बी लुकिंग? द सर्विस प्रोवाइडर विल लुक इनटू इट. इन द ऑन प्रीमाइस हु विल लुक इनटू इट? नेटवर्किंग. अगर से कुछ स्विच में से वायर निकल गया, कौन देखेगा? You need to look. Yes. So if some server guys are there, then they know the pain of this. So how the things are happening here. So this is something that you can relate with the EC2 services overall. So yes, guys, any difficulties here? Yes. Now you can go ahead and ask if you have some difficulties or issues or some confusion after you let's observing the service models. So do you have any more things that comes to your mind? No. And remember, guys, very important point here. Doesn't AWS doesn't have access to your data and virtual machine. कभी भी याद रखना है कि AWS को कभी भी एक्सेस नहीं होता है. AWS को कभी भी एक्सेस नहीं होता है आपका जो डेटा है और आपका जो VM है. तो आपको एक बार VM उसने बना के दे दिया, then they will not have any access to the virtual machine. So you need to take care of virtual machine, you need to take care of your data. So AWS is not responsible for the data and the virtual machine. Data and the virtual machine. So let's see what is that shared responsibility model of AWS. So this is very important model. If you are working, if you are preparing for the solution architect, without this, you can't pass the exam. So this is very important. Okay. Yes. So here, ये जो लाइन है ना बीच की, ये एकदम थिन लाइन है. मतलब थोड़ा बहुत नीचे ऊपर हो सकता है, बट मोस्टली these are covered here. So tell me guys, in AWS अभी क्या होता है ना कि अभी, हाँ, आई विल गिव वन एग्जांपल. जैसे कि अभी हम लोग ये सेशन ले रहे हैं. Yes, guys, we are taking these sessions for you to learn the cloud computing. What I said that you will become an expert in the AWS cloud after listening to my session. So many people are sleeping in this time, right? So कुछ लोग सो रहे हैं, है ना? Either in the session or at the home without attending the session. So जो लोग अभी सो रहे हैं, right? So for them, am I responsible for them? Yes or no?
Is that my responsibility? No. If you are listening to my sessions and you are working very hard, then it is my responsibility that I can give you all the knowledge or the stuff that can be beneficial for learning the cloud. ठीक है, उसमें अगर से कुछ कम ज़्यादा हो रहा है then I will be responsible. So AWS ने भी जब इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है तो कस्टमर्स कंप्लेंट ना करे कि यस मैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो गया है ना, और कोई चीज हो गया, एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा यूजर हैक हो गया, सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? सो दैट डेफिनेशन इज गिवन हियर. तो दिस इज कॉल्ड एज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस का नहीं होता है. सो दिस इज द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सभी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरा ही नहीं होता है कि मैं आपको सब चीज करूं. सो देयर शुड बी सम things that are from your end and some are from our end. So this is the said this is the concept of AWS, that is a shared responsibility. देखो अभी AWS में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर AWS में AWS प्रोवाइड कर रहा है, वॉट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर वी सॉल्व राइट नाउ, वी जस्ट गॉन थ्रू दिस. तो ये जो भी दे रहा है ना AWS आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये सारा जो है ये AWS देखेगा. So what is the responsibility of AWS? Is the responsibility or the security of the cloud is the responsibility of AWS. What is the responsibility of AWS? Security of the cloud. Security of the cloud. Of the cloud मतलब क्या कि क्लाउड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसका सिक्योरिटी देगा AWS. बट सिक्योरिटी इन द क्लाउड मतलब उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उस सर्वर्स के अंदर जो है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस ने लेना. इसका किसको लेना है? आपको लेना है. कस्टमर नीड टू रिस्पॉन्स टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी इन द क्लाउड. सिक्योरिटी इन द क्लाउड. अभी मैंने आपको एक लैपटॉप दे दिया, तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द हार्डवेयर लेवल. आप लैपटॉप जब परचेस करते हो आपको वारंटी देता है राइट. सो आप ये नहीं बोल सकते वहां पे वापस जाके कि तुमने तो वारंटी दिया था, मेरा तो ये एप्लीकेशन डिलीट हो गया अंदर से. सो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सर्विस प्रोवाइडर. या फिर जो भी हार्डवेयर आपने परचेस किया एचपी का, तो वो एचपी आपका रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो आप उसमें जो भी कुछ रख रहे हो, जो भी कुछ डेटा रख रहे हो, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर. तो अगर हार्डवेयर लेवल पे कुछ इश्यू आता है, टेल मी गाइस, इफ कीपैड इज नॉट वर्किंग, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? लैपटॉप में अगर कीपैड नहीं, देन सर्विस प्रोवाइडर. आप सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हो, दिस इज नॉट वर्किंग. So you said that you are giving me the guarantee. So these things are there. So AWS क्या है? Responsibility. What is the responsibility of AWS? Security of the cloud. सिर्फ ऑफ लिखना है तुमको, ठीक है, आंसर में. What is the responsibility of AWS? Security of the cloud. And what is the responsibility of customer? Security इन द क्लाउड. सिक्योरिटी इन द क्लाउड. ये दो टर्म बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो व्हाट इज द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड? देखो अभी सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड मतलब क्या, जो भी रीजन्स है एडब्ल्यूएस के, वी विल बी लुकिंग इनटू इट मोर डिटेल्स ऑन अपकमिंग सेशंस. देयर रीजन्स आर देयर. सो एडब्ल्यूएस का ओवरऑल ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है. सो ईच हैव द रीजन्स, अवेलेबिलिटी जोन्स एंड द एज लोकेशंस. तो ये पूरा जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, that if something happens to their global infrastructure, कुछ भी हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, then the AWS is responsible for that. कंप्यूट जो सर्वर आपको दे रहा है, अगर कंप्यूट सर्वर क्रैश हो जाता है, सर्वर कुछ प्रॉब्लम देता है, then it will be responsibility of the AWS. If something happen to the storage, पूरा ड्राइव ही ये हो गया, करप्ट हो गया, then AWS will be responsible for the storage. डेटाबेस, डेटाबेस आपने सब चीज सही से डिप्लॉय किया था, बट डेटाबेस जो है तो वो हार्डवेयर लेवल का है ये सारा चीज, ठीक है. सो डेटाबेस क्या हो गया, पूरा चला गया, then the responsibility is AWS. So what AWS is doing, you are looking that like you are storing at one place, but in the background AWS is storing at multiple locations. आप S3 में भी डेटा रखते हो तो वो तीन अवेलेबिलिटी जोन में अलग अलग जगह पे वो स्टोर होता है. सो टू इंक्रीज व्हाट, अवेलेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी, तीन जगह पे वो स्टोर करता है. टू, yes, so to increase the durability, to increase the durability. Tell me guys, durability increase हो रहा है, availability automatically होगा. Why? Because if some availability zone is down, then it is available from other availability zone. So but durability concept के लिए वो तीन जगह पे replicated है data, so that your data should not be lost. So data lost ना हो जाए, right? So that is the main concept of the
multiple like storing at multiple locations. So redundancy we can call it as. Redundancy मतलब क्या, एक चीज ही डबल डबल आप रेप्लिकेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज द रिडंडेंसी. डबल डबल रखते हो, आपके पास एक चीज है, हाँ यार इट इज वेरी सिमिलर टू द बैकअप गाइस. सो दिस इज द बैकअप. देन डेटाबेस नेटवर्किंग, जैसा कि अभी नेटवर्किंग में कुछ इश्यू हो जाता है कि कुछ हार्डवेयर लेवल फेलियर होता है या फिर कुछ राउटर स्विचेस ये फेल होते हैं. सो हु विल लुक इनटू इट? The AWS will look into it. And this software is operating system type of thing. You can say that software, not software, operating system. This software is very related to the, you can say, to manage all those VMs. You can say that this is the software that is managing. So it could be the VMware or it could be some other type of vendor softwares. So this is something that AWS is responsible for. Then customer is responsible for which? तो कस्टमर के पास जो भी कस्टमर को दिया जाता है कि नेटवर्क तो दिया है, एडब्ल्यूएस नेटवर्क के एंड पे प्रोटेक्ट करेगा, बट इट इज हार्डवेयर लेवल प्रोटेक्शन. बट एडब्ल्यूएस आल्सो गिव्स यू सम सर्विसेज टू नेटवर्क, है ना, वीपीसी एक सर्विस है. सो इफ यू आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क प्रॉपरली, इफ यू आर नॉट कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क प्रॉपरली, अभी वीपीसी है तो आप वीपीसी को पब्लिक रख रहे हो और उसमें डेटाबेस रख रहे हो, सो दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ एडब्ल्यूएस, इट इज योर प्रॉब्लम, यू नीड टू लुक इनटू इट. तो आपको डेटाबेस जो है तो प्राइवेट में रखना है, किसी को एक्सेस नहीं देना है. देन आप यूजर जब बनाते हो तो यूजर्स को प्रोटेक्ट करना है, यूजर्स को जो कीज है वो प्रॉपरली मैनेज करने हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे. देन यू कैन यूज द encryption to encrypt your data so that data cannot be stolen by third party. Then you can मैनेज द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक बार मिल जाती है AWS से, राइट, फर्स्ट टाइम जब आप ओएस मतलब जब सर्वर लॉन्च करते हो तब आपको ओएस मिल जाती है. देन हु विल बी अपग्रेडिंग द वर्जन ऑफ द ओएस? आपको अपग्रेड करना होता है. इफ यू आर स्टिल यूजिंग द 2008 और 2012 ओएस, देन इट इज मोर वल्नरेबल टू द अटैक्स. सो ये आप AWS को नहीं बोल सकते हो कि योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी बैड दैट आई एम गेटिंग द cyber attacks. So who will be responsible here? आप responsible हो because you didn't upgraded the operating system. So you need to upgrade by yourself. So OS का जो भी upgradation वगैरह है ये आपको देखना है. Then network firewall protection. Who will be protecting by security groups है. तो ये सारी चीजें हम लोग अभी नहीं देखेंगे इसको. Just I am telling you some firewall concept is there. आपको पता होगा. What does firewall do is it will restrict the traffic. वो ट्रैफिक को क्या करता है? फिल्टर करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कि ओनली ऑथेंटिकेटेड ट्रैफिक विल बी अलाउड टू पास इनटू द नेटवर्क. तो ये चीज फायरवॉल का होता है, ये मेन फंक्शन फायरवॉल का होता है. सो हु विल बी टेकिंग केयर ऑफ दिस? यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, नॉट द AWS. ये फायरवॉल का कॉन्फ़िगरेशन आपको ही करना होता है. देन IAM यूजर है, प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, कस्टमर का डेटा. आपके पास कस्टमर का डेटा आता है तो उसको प्रॉपरली आपको रखना है, बिकॉज कस्टमर मे फील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. अभी आपने कोई इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी, राइट? आर यू रिमेम्बरिंग गाइस? आई just collected the information by taking the Google form. So कुछ email, phone numbers, कुछ sensitive data है. Phone number is very sensitive. So if I am not able to protect my data, then who will be responsible? I am only the responsible. Even if you saw that form of the Google form, that what it says is this information is protected and not shared, right? So it is securely stored with me. Yes, so I cannot share it with some other parties, or I must be the responsibility of your data. So this is the customer data, very important. तो ये चीज होता है कि आपको ये मेंटेन करना है. So did you guys understood the concept of this? Who is the responsibility? Whose responsibility is what? So AWS is responsible for security of the cloud, and customer is responsible for security in the cloud. Security in the cloud. So just let me show you the global infrastructure. AWS global infrastructure. AWS. This number just 1 year before, 1 year भी नहीं हुआ है इसको, 21 था. Just if you see this number, few months back, like eight months back, this number was 21. Right now it's 31. So 10 new regions are deployed and still it is counting. तो देखो यहाँ पे announced plans for 12 more availability zones still.
तो इंडिया में पहले सिर्फ एक मुंबई रीजन था जहाँ पे कि AWS का नेटवर्क था, बट राइट नाउ वी हैव अनदर रीजन. व्हाट इज दैट रीजन गाइस? एनीवन नोस? In India, one more region has entered. That is the Hyderabad. Is the Hyderabad. So if you should see that Asia Pacific, in the Asia Pacific, we have the region. So here if you see India, तो एक रीजन ये है मुंबई, which was launched in the year of 2016, और ये है हैदराबाद जबकि 2022 में लॉन्च हुआ है. ओके, रिसेंटली दे लॉन्च दी हैदराबाद रीजन एंड स्टिल देर आर ऑन गोइंग. ये लाल मतलब क्या है? कमिंग सून है. सो only one region in the Asia Pacific. So here, if you see that AWS infrastructure is divided into multiple regions. Regions are the geographical location, guys. These are just a geographical locations. तो ये एक बिग जोग्राफिकल लोकेशन होता है, जैसे कि इंडिया है तो ये एक जोग्राफिकल लोकेशन होता है. एंड इन दिस रीजन वी हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स. यस, आर यू एबल टू सी दैट अवेलेबिलिटी जोन्स इज 3? मुंबई में 3 अवेलेबिलिटी जोन दिख रहा है. लोकल जोन छोड़ दो, सिर्फ अवेलेबिलिटी जोन पे कॉन्सेंट्रेट कर दो. देर आर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स. यस गाइस, सो ईच अवेलेबिलिटी जोन यू कैन कंपेयर विथ ए डेटा सेंटर्स. और एक अवेलेबिलिटी जोन में सिंगल डेटा सेंटर भी नहीं होता है. अवेलेबिलिटी जोन इज ऑल्सो ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डेटा सेंटर्स. तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अपकमिंग सेशन में देखेंगे. और जस्ट बिफोर दैट, सो जस्ट यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि इतने रीजन्स अभी कमिंग सून में है, राइट? ऑकलैंड. So all these are the regions that are currently available from the AWS. In India, we have the 2. So there are so many other regions that are launched recently. So that becomes a 31. So how many regions are there in the global infrastructure of AWS? We have 31 regions. And these are counting. ठीक है, तो ये चीज चलते रहेंगे. ओके, इंक्रीज होते रहेंगे बिकॉज AWS is always upgrading itself. So we will see those concept in the tomorrow sessions. So the regions and all, what are those? And after doing that, we will be looking into the support. So that support क्या होता है, किस टाइप के प्लान्स होते हैं, और फिर हम लोग अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पे बढ़ते आगे. Yes guys, anything from the today's session and previous sessions? So what we will be doing, we will be stopping at exactly 8 o'clock. That's sometimes it will extend if some concept is ongoing. तो पूरा concept complete करने के लिए हमको कभी wait करना होगा 10 to 15 minutes. That is a buffer for me. But I will complete till 8 o'clock. But if there is something that is ongoing, तो उसको पूरा खत्म करना है तो हम लोग 8:15 तक extend करेंगे. In very rare cases. Okay. I will plan out like that only so that we can complete at 8 o'clock. Yes guys, shall we stop at this point? Any difficulties, doubts with this particular thing? तो अभी तक जो था हमने बेसिक्स सब देख लिया है. मोस्ट ऑफ द बेसिक्स वी कवर्ड. एंड आर यू कंफर्टेबल विथ द type of teaching and type of things that we are, because I am not allowing you to unmute yourself. That is more important. Why? Because confusion होता है हर एक को फिर, राइट? सो इफ यू हैव एनीथिंग टू आस्क, यू कैन यूटिलाइज द चैट. तो आपके पास चैट है, आप चैटिंग का अच्छे से मतलब यूटिलाइजेशन कर सकते हो. आई कैन बी लाइक विजिबल, आई कैन सी योर चैट्स, ऑल द चैट. So even though I am sharing the screen, I can see your chat and all. So that if you have any difficulties, you can ask in the chat window. We will cover all the doubts. If I'm not able to clear your doubts in this session, in the next session I will be definitely covering that. So AWS is very dynamic, so that in some cases there could be some concepts that are newly introduced. So that I also not be aware about those things. So in some cases there could be confusion, but remember guys, whatever things that we are taking in the session, तो आपको इसको revise करना है. ये चीज मत भूलना. If you are not revising the sessions, then it is of no use. ये याद रखना है, because you have all the sessions, all the videos available over the internet. So what makes it different
from there. So you can ask me the session, ask me the questions in the session. You can be two way communicating. तो इसी टाइप से हमारा सेशन चलेगा. So I don't think that you need extra time for studying, right? So आपका जो सेशन में इसी में ही सारा चीज़ें कवर होती रहेंगी. इवन व्हेन AWS का जब भी हम लोग देखेंगे तो इसमें भी सेम टाइप का मतलब रहेगा वे ऑफ टीचिंग. तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. यू विल माइट बी ऑब्जर्विंग इन अपकमिंग सेशंस. तो इसमें आप कुछ मतलब ये नहीं करने की ज़रूरत, ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. एवरीथिंग विल बी टेकन केयर फ्रॉम हियर इटसेल्फ. बट आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाए. So you need to be like you should be doing hardware if you want to like complete this in run time only. तो आप ऐसे पेंडिंग रख के काम करोगे तो नहीं हो पाएगा. एंड रिमेंबर, जो भी अभी सेशन में रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, सो इन सम लाइक अभी तो इतना कुछ हमारा हुआ नहीं है अभी तक डिटेल में. तो जब हम स्टार्ट करेंगे डिटेल में, AWS जब स्टार्ट हो जाएगा, तो यू विल बी गिवन विद दी क्विजेस गाइस. सो सेशन वाइज क्विज रहेगा आपका. तो उसमें आपको जो भी अभी तक हुआ है सेशन में, डिपेंडिंग अपॉन दैट you need to answer those questions, and it is evaluated guys, and it is evaluated. So you must be attentive in the session, and you must be clearing all the doubts in the session itself. और आपको रिवाइज भी करना है सेशन को. And you should be there for each and every session unless there is some more difficulty. आपको बहुत कुछ इमरजेंसी है उतने उस टाइम पर ही आपको मतलब सेशन स्किप करना है. Otherwise you should be regular in the session. Those who are not like doing sessions regularly, I will be removing them from the group, and those will not be entertained afterwards. Because क्या होता है ना कि कुछ लोग मतलब फ्री का बेनिफिट नहीं उठाते. So they thought that this is the free. Tell me guys, at any point of time you are feeling that this is the free session, 1 month फ्री है इसलिए ऐसे पढ़ा रहे, ऐसे कुछ फीलिंग आ रहा है कुछ? सो एवरीथिंग इज अप टू द मार्क, एंड मतलब आपको क्वालिटी ही मिल रहा है. सो टेक द बेनिफिट लाइक यू आर पेड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन. सो प्लीज गो थ्रू द सेशंस एंड डोंट मिस सिंगल सेशन. तो आप अगर जो सेशन मिस करोगे, you won't be understanding the next concepts. And those who are not attending the sessions, I will be removing, because if you see in today's session how many people are attending, just let me see. Okay, so very few, like okay, four, eight people are there in the session. So in the group we have how many people guys? 18 people. So 18 participant, out of that only 8. अब इसमें से 2-3 लोगों का इश्यू हो सकता है, सपोज 10 लोग हम कंसिडर करेंगे. बट व्हाट अबाउट अदर्स गाइस? So I don't want anybody that don't need this AWS class. I don't want them here. So I want only serious people to attend the sessions, so that it will be helpful for them and also for us, because they are wasting the time here, right? सो जस्ट लिसन करने से नहीं होगा, तुमको जल्दी उठना है, उठ के सेशन सुनना है. कुछ लोग होते हैं कि चलो बाद में हम लोग सेशन सुनेंगे आफ्टर सम टाइम. सो वी विल नॉट बी अलोइंग देम टू लिसन लाइक दैट, है ना. हम लोग प्रोवाइड कर रहे रिकॉर्डिंग्स इसलिए नहीं कि आप बाद में देखना है सेशन, राइट. यू मस्ट बी अटेंडिंग द सेशन एंड यू कैन रिवाइज द सेशन. वो रिवीजन के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स दिया जाता है, ना कि डायरेक्ट देखने के लिए. यस गाइज, प्लीज मेंटेन दैट. ओके, सो स्टैंडर्ड मेंटेन करो और पूरा सेशन अच्छे से सुन लो. इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. यस. Okay guys, thank you for attending this session guys. We will continue from the next session tomorrow same time.